students, this is mathematics class for 8. Today we are doing exercise 1.1 and these questions. Question number 6. Multiply 6 by 13 by the reciprocal of minus 7 upon 16. Multiply. You have to multiply 6 by 13 by the reciprocal of 7 upon 16. तो 6 by 13 को minus 7 by 16 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है. Solution of question number 6. Okay. Reciprocal of minus 7 by 16. First we have to find out reciprocal of minus 7 by 16. So what will be reciprocal? You know that reciprocal में क्या करते हैं? Numerator in place of denominator and denominator in place of numerator. तो 16 ऊपर चले जाएगा and minus 7 यहाँ पे आ जाएगा. Okay, we know that it is not a correct way of writing, so we can write minus upside minus 16 upon 7, or we can leave this one as it also. You can write both way. Earlier I told you if 16 upon minus 7 into minus 1 into minus 1. So plus into minus, minus 16 बन जा 16 and minus into minus plus 7 बन जा 7. So you are getting minus 16 upon 7. Okay, actually that is reciprocal and same thing we can write like that also. Or if you want to write only this one, so you can write this one only. Okay, you can write this one like that also. Okay, reciprocal of this one. Now multiply 6 upon 13 by this. 6 upon 13. 6 upon 13 into reciprocal of this one. Reciprocal of this one 16 upon minus 7. Okay. So now we will calculate this one. Anything being cancelled here? Nothing being cancelled here. So we will multiply directly. 16 6 are 96. Upon plus into plus 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 into minus minus and 13 into 7 you can do, or you can multiply 13 and 7. 13 7 ja 91. That's your answer of 6th question. Okay, that is not correct way of writing this one. Earlier I told you. So same thing, you can write minus upside 96 upon minus 91 into minus 1 into minus 1. Okay, both sides you have to multiply by minus 1. So plus into minus, minus 96 upon minus into minus plus 91. Or directly also you can write this one. Here I told you, no, we can write this one like that also. 16 upon 7. Earlier I told you we can write this one like that also. So same thing here. That is calculation, and directly also you can write like that also. We can shift the minus upside and method is this. Okay.
multiply 6 upon 13 by the reciprocal of minus 7 upon 16. First we will find out reciprocal of minus 7 upon 16. माइनस 7 अपॉन 16 का रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर ऊपर चले जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, तो ये माइनस 7 एंड हियर 16 एंड सेम थिंग वी कैन राइट लाइक दैट आल्सो. माइनस को हम ऊपर कर सकते हैं बिकॉज दैट इज नॉट करेक्ट वे ऑफ राइटिंग. नाउ गिवन नंबर है 6 अपॉन 13, यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल आपका है 16 अपॉन minus 7. When you multiply, so you are getting 96 upon minus 91. So that is not correct way of writing. We have to write like that. So how this one coming? We have to multiply both side by minus 1. Minus 1 से multiply करेंगे तो plus into minus minus 96 बन गया 96 plus into minus into minus plus and 91. Directly इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं. Okay, that's your first question. This one directly you can write minus 91 upon 96, and this is calculation for this whole. Like that, you have to do sixth question. Okay. After that, we will do next question, question number 7. Tell what property allow you to compute 1 upon 3 into within bracket 6 into 4 by 5 and 1 by 3 into 6 within bracket into 4 by 3. Question number 7. So here given 1 by 3 into within bracket 6 into 4 by 3. Okay. And we can write this one 1 by 3 into 6 both together and into 4 by 3. So tell what property allow you to compute this as this. Here question is this, that according to which property you can write this one like that. आप इसको ऐसे भी लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं एंड ऐसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. So if this one A into next one B into C, ये C है तो A into B we are writing together into C. So you know which property this is. This one associative property of multiplication. So here we will write by associative property. Property of multiplication. You can write simply associative property or you can write associative property of multiplication. Okay. MULTIPLICATION. Here you have to tell what property allow you to compute this as this. You have to write property only. So if this one, we can use this property. And what is this property called? This property called associative property of multiplication. Okay, this is solution of question number
7. Now coming question number 8. Is 8 by 9 the multiplicative inverse of this? Why or why not? Okay, is 8 by 9 is the multiplicative inverse of minus 1 upon 8. You have to tell this one multiplicative inverse of 8 by 9 or not. If yes, so why? If not, so why not? Okay, you know that when you multiply number and its multiplicative inverse, so product coming 1. So question number 8. Two choice you have. You can find out its multiplicative inverse. Okay, and then you can match with this one. Another method that you can calculate directly. Multiplicative inverse of minus 1 upon 8. Okay, your number is minus 1 whole 1 upon 8. So how you will calculate? Keep minus outside, this whole together. So minus remain outside. 8 बन जा 8 plus 1 9 upon 8. So this number is minus 9 upon 8. Same thing we can write like that also. If we calculate 8 into 1, 8 1 ja 8 plus 1 9 upon 8 and minus you will keep outside as it. तो नंबर आपका बन जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 9 upon 8 minus 1 whole 1 by 8. You can write like that also. Okay. Minus 1 whole 1 upon 8 equals to, we can write this also. So now you have to tell multiplicative inverse of minus 9 upon 8. इसका multiplicative inverse बताना है. तो क्या होगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चले जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चले जाएगा. तो 8 कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा and minus 9 नीचे चला जाएगा. That is multiplicative inverse of this one. Now compare this to this. Here 8 upon minus 9 and here 8 upon 9. Okay? अगर आप इसको और इसको 8 upon minus 9 and 8 upon 9, 8 upon minus 9 and 8 upon 9 इक्वेट करें तो both are equal? Both are not equal. Therefore, it will not multiplicative inverse of this one. Multiplicative inverse of this. क्या होगा इसका multiplicative inverse? First we calculate this one. इसको calculate करेंगे. कैलकुलेट करने के बाद क्या मिला हमें? minus 9 upon 8. After calculation we get minus 9 upon 8. इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो 8 ऊपर चला जाएगा, minus 9 नीचे आ जाएगा. ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है.
So 8 upon 9. In question given is 8 upon 9 is the multiplicative inverse of this. So 8 upon 9 not equals to 8 upon minus 9. So answer will be no. Okay. We will write no. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 8 इक्वल्स टू 8 है, 9 इक्वल्स टू 9 है, बट हियर पॉजिटिव साइन एंड हियर नेगेटिव साइन, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए नहीं होगा. नो 8 अपॉन 9 इज नॉट actual number is this one, so we have to answer in term of this. Okay, when you calculate this one, this being equals to minus 1 upon 8 equals to किसके हो रहा है, minus 9 upon 8 हो रहा है. यही नंबर है एक्चुअल नंबर. we will write no 8 upon 9 is not the multiplicative inverse of this minus 1 whole 1 upon 8. This is one method. Other method, एक मेथड तो आपका ये है. सेम क्वेश्चन वी कैन डू बाय डिफरेंट मेथड आल्सो. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड मेथड. अब सेकंड मेथड क्या है, यू नो दैट नंबर इनटू इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल्स टू 1. So we will write number into its multiplicative inverse. Inverse equals to 1. Number into its multiplicative inverse. Number and its multiplicative inverse equals to 1. We know that number into its multiplicative inverse equals to 1. अब आप देखिए नंबर क्या है, is 8 upon 9 the multiplicative inverse of this one. तो ये आपका नंबर है, is 8 upon 9 the multiplicative inverse of this. आपका नंबर है -1 whole 1 upon 8 into its multiplicative inverse. इसका multiplicative inverse क्या है गिवन, 8 upon 9. 8 upon 9. This one given in your question. 8 upon 9 आपको given है. तो calculate this one, minus as it, 8 1 जा 8 plus 1 9 upon 8 into 8 upon 9. This to this cancel, this to this cancel, what left? -1. Okay, क्या बचा, -1 बचा. तो -1 not
होता है। अगर आपको चेक करना है तो क्या करेंगे, नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे, प्रोडक्ट उसका होना चाहिए 1 के इक्वल। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई किया तो ये दिस वन कमिंग -1 एंड आना चाहिए 1, तो बोथ आर नॉट इक्वल, सो व्हाट वी राइट, नो 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ this. So after that we will write same, -1 and 1 इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए हम लिखेंगे नो 8/9 is not the multiplicative inverse of this number. Both method I told you can do by any method. Okay. Now next question. Question number 9. Is 0.3 the multiplicative inverse of this one? Same question here. Okay. So this question I am telling you by second method. Number we will write, we know that number into its multiplicative inverse. Inverse equals to 1. अगर आप नंबर को और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. So here written is 0.3 the multiplicative inverse of this. तो आपका नंबर क्या है, what is your number? नंबर है आपका 3 होल 1/3, ये आपका नंबर है. ओके, एंड इनवर्स ऑफ दिस वन, दिस इज नंबर. And what is inverse given? Multiplicative inverse of 3 होल 1/3. इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये इक्वल हो जाएगा 3 3 जा 9 + 1 10/3. इसी को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10/3. एंड इसका इनवर्स क्या दिया है हमें, 0.3. इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, 3/10. ओके, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, हियर 10 यू हैव, सो 0.3. एक 0 है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा. तो यू कैन सी by our calculation also this one coming same.
तो डायरेक्टली यू कैन राइट yes. Okay. And other choice you have, नंबर है आपका 3 होल 1/3 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, वो क्या आ रहा है आपका 3/10. ओके, इट शुड बी इक्वल्स टू 1. 3 3 जा 9 प्लस 1 10/3 इंटू 3/10. कैलकुलेट करेंगे, दिस टू दिस कैंसिल, दिस टू दिस कैंसिल, सो व्हाट लेफ्ट 1. तो 1 इक्वल्स टू 1 आ गया. ओके, अदर चॉइस है आपके पास 3 होल 1/3. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गिवन है 0.3. 0.3 आपको गिवन है, तो उसको 3 3 जा 9 प्लस 1 10/3 कर देंगे n इंटू 0.3. ओके, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसी नंबर को आप लिख सकते हो 10/3 इंटू, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3/10. When you will do calculation, so you can write this one like that. This to this cancel, this to this cancel. तो क्या बचा आपके पास 1. So both way you are getting same answer. So what we write? Yes. Yes. 0.3 is the multiplicative inverse, INVERSE, inverse of 3 whole 1/3. Okay. Yes, 0.3 is the multiplicative inverse of 3 whole 1/3. And region I told you in starting, number into its multiplicative inverse. नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए. अगर ये इक्वल्स टू 1 हो जाता है तो गिवन नंबर आपका, गिवन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गिवन नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा. ये आपका गिवन नंबर है, ये आपका गिवन नंबर है, एंड ये इसका गिवन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर 1 आ जाता है तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा. अगर 1 नहीं आता है तो नहीं होगा. फर्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 8 दैट नॉट कमिंग इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे नहीं था बट यहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे होगा. ओके, सो वी विल राइट लाइक दैट. Here we have to write P, no, that number into its multiplicative inverse equals to 1. अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आना चाहिए. अगर आता है तो गिवन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गिवन नंबर का होगा, अदरवाइज नहीं होगा. यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, इसलिए 0.3 is the multiplicative inverse of this one. Same way you will do this question in your copy.